This is my channel Learn Medical by Dr. Smara, and today we have got this review of cough expectorant, that's Macbery LS. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notifications of my coming videos. So let us start. Macbery LS expectorant syrup. Macbery LS expectorant stuff, as you can see, it's a combination medicine and it's used in the treatment of cough with mucus. जो बलगम वाली खांसी होती है उसको ट्रीट करने के लिए यानी प्रोडक्टिव कफ को ट्रीट करने के लिए मैकबेरी एलएस एक्सपेक्टोरेंट का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये थिन करता है म्यूकस को जो हमारे नोज़ में, विंड पाइप में और फेफड़ों में म्यूकस होता है उसको थिन करता है एंड इट मेक्स इट ईजियर टू कफ आउट. इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम रनिंग नोज, नाक बहती हो, स्नीजिंग हो, इचिंग हो और वाटरी आइज के लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है मैकबेरी एलएस एक्सपेक्टोरेंट. हाउ मैकबेरी एलएस एक्सपेक्टोरेंट वर्क्स? As it's a combination medicine, it contains AMBROXOL, LEVOSALBUTAMOL and GUAIFENESIN. What AMBROXOL does, it's a mucolytic. It thins the mucus and loosens the mucus in the airways, makes it easier to cough out. जितना भी mucus हमारे lungs में होता है, airways में होता है, उसको thin करता है. लेवोसॉल्ब्यूटामॉल जो है ये ब्रोंकोडाइलेटर है. इट रिलैक्सेस द मसल्स अराउंड द एयरवेज, हेल्पिंग देम अप एंड मेकिंग ब्रीथिंग ईजियर. Then there is guaifenesin in this expectorant, and it's itself an expectorant that further helps to clear mucus from the airways by making it thinner and less sticky. Now the precautions. In pregnancy, it's unsafe. We can't use Macbery LS expectorant as it contains levosalbutamol. So don't use beta blocker and this syrup together like propranolol. It should not be taken together. If you like my videos, kindly subscribe the channel, press the bell icon so that you will receive notifications. Thank you.